बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सो दैट विल बी अबाउट द फ्रीक्वेंसी, द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स। तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब हमने कहा कि मॉलिक्यूल व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द आईआर रेडिएशंस, इट अंडरगोज it absorbs the radiations if it has the dipole moment or if its dipole moment changes during the course of stretching. ठीक, अब जो ये वाइब्रेट मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा, so that vibration, the extent of vibration will be different for the different types of fragments in the molecule. तो ये वाइब्रेशन जो होती है इन अ मॉलिक्यूल, तो वाइब्रेशन इन अ मॉलिक्यूल हम लिखेंगे द वाइब्रेशन जो होती है in a molecule, so that can be due to the number one, that can be due to either this by the stretching of bond, so that can be due to the stretch. So matlab bond will go from mean position to extreme position, or stretching compression is called as stretching vibration, or that can be bending vibration. That can be bending vibration. ठीक, so stretching means bond undergo stretching. मिसाल के तौर पर अगर आपके पास HCl मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो ये atom will go towards this side, will go towards this side, so it's a stretch. अब इस केस में बेंड पॉसिबल नहीं, क्योंकि बॉन्ड को बेंड करना तो तोड़ना पॉसिबल नहीं है. However, if you have polyatomic molecules like water, अब this bond it can undergo this bending also. Look at this. So ये bonds they will go, you see, bending. So the bonds will bend and stretching also, because this oxygen atom, let us say this and this will get stretched. It goes towards this position, it goes to likely this and this. तो हम ये कह सकते हैं जो polyatomic molecules है, they will undergo stretching as well as bending. ठीक, while as so they undergo, हम लिखेंगे तो stretching also and bending also. And in this case it is only stretching. So diatomic molecule is only stretching. तो अब molecule या तो stretch करेगा या तो bend करेगा, and accordingly so it will have the vibration frequency. और ठीक है ना. So अब अगर हम दोनों को compare करेंगे, it is obviously bending molecule is very easy. तो हम ये कहेंगे in nutshell that energy required for stretching, so stretching frequency required for stretch, that's greater than that required for bending the molecule. Bend. तो ये आप relationship याद रख लीजिए, that more energy is required for stretching a molecule during the stretching and less energy required for bending. So the stretching frequency is more than the bending frequency. Fine. अब उसके बाद ये तो होगी मॉलिक्यूल्स में कि किस तरह. अब इसमें अगर हम टाइप्स और भी होती है, लाइक स्ट्रेचिंग में होती है सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, बेंडिंग में होता है ट्विस्टिंग, वैगिंग, तो बहुत सारा सीजनिंग, रॉकिंग, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे. इन जनरल फॉर दिस पर्पस एग्जामिनेशन दिस इज मोर देन इनफ. सो इट इज योर स्ट्रेचिंग और इट इज योर बेंडिंग फ्रीक्वेंसी, एंड द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज मोर देन बेंडिंग बिकॉज इट्स इजी टू बेंड अ बॉन्ड. अगर ये इजी है दैट मीन्स की फ्रीक्वेंसी कम लग जाएगी, और इट विल एब्जॉर्ब. जब ये रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा ना, तो उससे क्या होगा, अगर ये लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होगी इट विल गो बेंडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी दैट विल क्रिएट स्ट्रेचिंग आल्सो. ठीक, उसके बाद मॉलिक्यूल जो है ओवरऑल, अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल है, सो इन अ मॉलिक्यूल अगर एक कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें देयर आर टू motions in a molecule, there are two types of vibrations in the molecule. So if you take an organic molecule, let's take example. Let's take a molecule. We'll take CH3, CH2, let us say CH2, and then let us say it is COOH. So it's some sort of acid. ठीक, इसमें दो पार्ट्स है, एक तो ये पार्ट है और ये दूसरा ये. Now this is a functional group and this is the rest part of the molecule. ठीक, ऑलमोस्ट इसी तरह का होता है हर किसी मॉलिक्यूल में. एक फंक्शनल ग्रुप आपके पास होगा और एक आपके पास होगा द रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल.
ठीक, यहाँ याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट दैट इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एक टाइप की वाइब्रेशन वो होती है that arises, that is actually the collective motion of molecule as a whole, मतलब almost सब molecule, क्योंकि ये तो major part है, तो एक frequency that is due to the collective motion of molecule as a whole. So one part of the frequency will be due to the collective vibration of molecule as a whole, collective vibration of molecule. और दूसरा होता है that is specifically because of this functional group, that's called as functional group vibration. Functional group vibration. So that's called a functional group vibration. So again मैं discuss करूँगा that in organic molecules the motions can be the organic the vibrations could be due to the whole as a molecule, to the whole as a molecule, or it can be to the individual functional groups. ठीक, so अब ये जो रीजन इट हैज बीन, ये जो मोशन है, यहाँ पे देखो, यहाँ तो कोई CH ग्रुप्स है, CH यूजुअली इनमें क्या होता है कि इट्स अ लो फ्रीक्वेंसी रीजन, लो फ्रीक्वेंसी रीजन, और फंक्शनल ग्रुप्स यूजुअली क्योंकि उनके पास हेटेरोएटम्स रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स हैलाइड्स, तो उनमें पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है, और सो बिकॉज ऑफ द डाइपोल मोमेंट चेंज आर मोर, सो दे विल बी हाई फ्रीक्वेंसी, सो दे आर हाई, दे एब्जॉर्ब इन द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. ठीक, तो इन जनरल अगर आपके पास कोई सभी मॉलिक्यूल, लेट अस से इस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू आईआर रेडिएशन, इट एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन, देन आपको एंड पे क्या मिलता है, अगर आपको याद होगा, एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द कंप्यूटर विल गेट a spectrum. ठीक, I will get a spectra. तो जो IR spectra होता है, in typical it is like, this is the typical IR spectra. So this is your transmittance or absorbance, fraction of the light transmitted, and this is your wave number. So wave number is 1 by lambda. So that is centimeter inverse. तो this versus this. तो आपको जो bands usually just make it a rough spectrum. इस टाइप का एक स्पेक्ट्रा मिलता है, नो द टिप्स. तो let us say it is 0%, it is 25%, it is 50%, it is 75%. ठीक, और यहाँ ये जो स्पेक्ट्रा है, let us say it is 4000 centimeter inverse, 3000, 2000, 1000, 500, so on. 500, ठीक है ना. What is the rest? Let's not get confused. 500, fine. 500. तो एक टिपिकल स्पेक्ट्रम होता है. तो इस स्पेक्ट्रम में जैसे मैंने कहा कि जब भी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, इसमें एक तो वाइब्रेशन विद द फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेशन. द फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेशंस आर, दे विल अपीयर टुवर्ड्स द हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. अब ये रीजन होगा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन, ये वाला, दिस साइड ऑन द लेफ्ट साइड, और जो राइट पोर्शन है दैट्स कॉल्ड एज, उसमें होगा द एवरेज मॉलिक्यूल, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल. द फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रीजन इस रीजन में पाए जाते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल ग्रुप रीजन, ये हाई फ्रीक्वेंसी रीजन. तो यूजुअली बिलो 1500. सो 1500 से नीचे दैट्स कॉल्ड लो फ्रीक्वेंसी रीजन, जिसमें ज्यादा बैंडिंग वाइब्रेशन होंगी, क्योंकि बैंडिंग जो है दैट इज लेस फ्रीक्वेंसी. और ये जो रीजन है यूजुअली हाई फ्रीक्वेंसी अबव 1500, तो उसमें यूजुअली सो दैट इज 4000 to 1500. एक्चुअली लेस देन 15 होता है तो यूजुअली से नीचे. तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप रीजन, और यहाँ ज्यादा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस पाई जाती है.
और यहाँ जो है द बेंडिंग वाइब्रेशंस। और यूजुअली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, फॉर एग्जांपल इन दिस, ये जो रेस्ट पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट इज ऑब्जर्व्ड हियर, the rest, the bending portion is observed here. तो functional groups are usually observed here. इसलिए जो region where the functional groups are observed is called functional group region. ठीक है ना। और इसमें और एक important बात होती है कि ये जो region होता है below 1500, क्योंकि इसमें मोस्टली बेंडिंग वाइब्रेशंस, अगर देखो ये मॉलिक्यूल में ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स तो है नहीं ओवरऑल, मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी ऑफ द पीक्स दे विल बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो उसी मॉलिक्यूल से that molecule has been utilized to actually to interpret the unknown compound. तो हम ये कहेंगे that the resulting whole molecule region of the absorption spectrum, which is called as a fingerprint region. ठीक, fingerprint spectrum, since it is a characteristic of molecule. तो ये जो लेटर, ये जो पोर्शन है, जो 1500 के आसपास वाला पोर्शन है, that 1500 region with a low frequency which occurs usually below 1500, that is actually, that comes under the fingerprint region. तो that has a major part to play in the fingerprint region. तो usually क्या होता है कि अगर आप functional group region निकाल दे molecule का, the rest part of the molecule that becomes characteristic of that particular molecule. तो एक molecule में एक ये जो है एक functional group region होता है और एक और the rest the fingerprint region, ये दो important regions होते हैं। तो fingerprint region की वजह से which usually occurs below 1500 molecule को, unknown molecule को जो है निकाल सकते हैं, रफली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तभी तो इसको कहा गया fingerprint region। अब इन जनरल विल गो टू द जो हमारा मेन पोर्शन होता है, जो और खास करके जो वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज दिस फंक्शनल ग्रुप रीजन। और इसका एप्लीकेशन भी यही मेजर है वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है कि वी आर इन अ पोजीशन टू गेट द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अननोन मॉलिक्यूल। तो फॉर दैट विल स्टार्ट नंबर 1, अगर विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो वेरियस वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप्स, जो एक्चुअली हमारा टॉपिक था, फंक्शनल ग्रुप्स की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके लिए अगेन विल गो बैक टू दैट फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन 1/2 pi c, it's like this, k by reduced mass। ठीक, इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, so that is directly proportional to k and under root of reduced mass। तो इन जनरल अगर मास दो एटम्स का ज्यादा होगा तो उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली लेस होगी, अगर फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन विल बी मोर। ठीक, सो इन दिस सेंस लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। इफ वी हैव C double bond C, ठीक, वी आर टॉकिंग अबाउट CC वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। सो अब इस केस में इस तरह से विल टेक C double bond C, now we'll take C triple bond C। Now in this case, it's a triple bond, the force constant will be more, K will be more. In this case, K will be less compared to this, and obviously in this case, K will be more less. That means the frequency will be more in this and then in this. So we could say that the vibration frequency is more here, followed by this and followed by this. So, or usually that is the stretching frequency, क्योंकि ये functional group बन जाता है molecule के, alkyne, alkane, alkane, ठीक, alkyne, alkene, alkane। तो इसमें जो वैल्यू देखा गया वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का, दैट इज अराउंड that is around 2300 to it is roughly 2100 0. In this case it's around 1600, it's around 1640 to 1600, and in this case it is lesser, so it's going less, it's around 1300. So you can clearly see centimeter inverse.
आप क्लियरली देख सकते हो इसमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, फोर्स कांस्टेंट इज मोर, so vibration frequency is more, followed by this. This number case. Now we'll take next example of the now the what we call as we'll take the reduced mass case. Fine, it will be K wala example. We'll take reduced mass. The reduced mass case में we will take different groups. For example, take CH. This is number one case. ये बहुत important है. So number second we'll take H stretching. Carbon के साथ H attach है, CH. C. Number two, different atoms, CO. And we can take CCl, one more example. So in this case, जो frequency of vibration, that is around 2960. ठीक. So this is the frequency. And likely if we take a CC, it is 1200. So CC it is 1200, around 1200. CO it is 1100. And CCl that is 800. अब यहाँ क्लियर देखो मास बढ़ रहा है, इट्स क्लोरीन मोर हाई मास, सो फ्रीक्वेंसी लेस देन ऑक्सीजन फॉलोड बाय दिस. सो इसका मास बहुत कम है दोनों एटम्स का कंपैरेटिवली, तो रिड्यूस्ड मास भी ऑब्वियसली कम होगा, सो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, फिर फॉलोड बाय दिस फॉलोड. सो इट इज एज पर द इनवर्स रिलेशनशिप विद द म्यू एंड दिस इज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द की. सो दिस इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी. उसके बाद और एक चीज होती है, थर्ड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन. So hybridization also plays an important role. Hybridization. For example, we'll take for hybridization. First, we'll go back here. So we have finished that. We have finished these two. That is, the K constant and the frequency vibration, which depends on the radiation mass. So we'll take a C. Number one case, we'll take C. We'll take example of a CH bond which is attached to triple bond. Now we'll take example which is attached to a double bond. Then we'll take example of a CH which is attached to a single bond. Now it's a triple bond, that means is carbon की hybridization is sp. Sp means more s character. Is sp2, that means less s character, and then followed by cc. So this s character is more, electronegativity is more, this is highly electronegative, and that means it becomes like oxygen, nitrogen, so on. So it is assume that it is nitrogen hydrogen bond, oxygen hydrogen bond, the polarity is more, so we expect that the frequency will be more. So it's around 3 0 and likely this one is 3080. And likely when you see CH case, it further goes down. तो अब यहाँ क्लियर देख सकते कि हाइब्रिडाइजेशन अगर इसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी, क्योंकि पोलर इज इम्पॉर्टेंट, तो बॉन्ड पोलर बन जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है उससे भी, दैट आल्सो इज वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप्स में, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देख लोगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो दैट इज अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेदर इट इज one more category will, that is if we have bonds like CCl, CBr, इस तरह से CF, second you have CCl, CBr, and then you have C iodide. So what about the vibration frequency of these bonds? ठीक, अब देखो अगर मास का से ज्यादा तो फ्रीक्वेंसी लेस, फॉलोड बाय दिस, फाइन.
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि the vibration frequency will be more, it will be less in this case than in less in this case, then sorry, less in this case, then more in this case, then more in this case, and then finally more in this case. So if mass less, the frequency of vibration will be more. तो ये तो हो गया कि और एक रूल. उसके बाद और एक आपके पास एक टॉपिक है, दैट इज द वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इन द फंक्शनल ग्रुप्स में जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है. तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एमाइड्स है, एस्टर्स है, एनहाइड्राइड्स है, एंड देन वी हैव कीटोन्स, अल्डिहाइड्स. सो दैट आई विल टेक इन अ सेपरेट क्लास बिकॉज़ दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो टिल फॉर द डे दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वाइब्रेशनल frequency in the IR spectroscopy and different functional groups.